discussion on about what is steroid and what is cholesterol, because cholesterol is very important steroid. Cholesterol is very important steroid. You people already know so many problems in present time because of the cholesterol, because of the cholesterol, right? So cholesterol is our prime point of discussion, and not only cholesterol, so many other steroid, which is very important. They are part of natural product chemistry. We had already discussed one steroid, that is cholesterol, right? So cholesterol responsible for different types of problem, and the point is without cholesterol life is not possible, right? Same steroid are very important for our body, right? Without steroid our existence is not possible. Different types of steroid exist inside our body, right? You can see our last discussion about natural product, right? Natural product means that product which produced from nature. That product which produced from nature, I already told, that is called natural product. And actually chemistry start from natural product. Actually the chemistry start from natural product. You people know natural things are very important, right? Ayurvedic medicines is actually a natural chemistry, right? So natural product are so many types. I had already discussed different types of natural product in my previous class, right? Out of that, most important natural product, first one is steroid, second one is alkaloid, third one is terpenoid, iridoid, right? So many other types, so many different types of natural product. Natural product means that product which we extract from natural things, which we extract from living natural things. They may be plants or they may be एनिमल ऑल्सो, राइट? तो नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनको हम अपनी लैब में बैठ के सिंथेसाइज नहीं करते. तो इन दिस वे आई ऑलरेडी टोल्ड केमिस्ट्री डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज नेचुरल केमिस्ट्री एंड सेकंड इज सिंथेटिक केमिस्ट्री, राइट? तो बिगिनिंग जो है केमिस्ट्री की और केमिकल्स की स्टडी की वो नेचुरल प्रोडक्ट से ही हुई, राइट? नेचर से ही हुई है, राइट? तो डिफरेंट टाइप्स स्टेरॉइड वी कैन आइसोलेट फ्रॉम plants and animal. Different types alkaloid we can extract from plants, right? And the maximum time medicinally very useful, right? Terpenoid also, iridoid also, right? Now the point, natural product में हमने सबसे पहले about our discussion what is steroid. So steroid is one of the important natural product. Steroid क्या होता है, एक बहुत important natural product होता है. सेकेंडरी अल्कोहल होता है, यू पीपल ऑलरेडी नो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, राइट? सेकेंडरी अल्कोहल होता है, राइट, विद C27 to 29 कार्बन एटम ऑफ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन, क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल with melting point range of 100 to 200 degrees Celsius, right? This solid material is called steroid. Steroid may be cholesterol, steroid may be estrogen, steroid may be testosterone, steroid may be progesterone, right? So many steroids that differentiate animal also, right? Testosterone, it means male hormone, right? Estrogen, it means female hormone, right? And progesterone means that hormone which we required, which female required during pregnancy, right? Cholesterol, you people already know, cholesterol is very, very famous steroid, right? Because maximum time in present conditions, the problem due to cholesterol, right? So if high concentration of cholesterol inside our body, then so many types of problem like blood pressure problem, then respiratory related problem, then heart related problem, right? So many problems, right? So nowadays cholesterol is a big problem. So we need to discuss about that. Steroid also. The term steroid means solid. Steroid, actually the steroids are a solid material. The nature of steroid are solid material, right? And when they skip inside our arteries and vein, then the problems and then the problems related to heart attack, right? So because it's a solid material, ये जो होता है वो solid material होता है. तो अगर ये कहीं पे आपकी arteries में या आपकी veins में कहीं पे अगर ये कलेक्ट हो जाता है, राइट, तो सारी
को ब्लॉकेज कर देता है, पूरी आर्टरीज को और आपकी पूरी वेन्स को ब्लॉकेज कर देता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। और अगर ब्लड का फ्लो नहीं होता है तो फिर क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो ये तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बाकी यू नो अबाउट मेल हार्मोन्स, यू नो अबाउट फीमेल हार्मोन्स, राइट, एंड द हार्मोन्स व्हिच वी रिक्वायर ड्यूरिंग pregnancy also, right? So these are some important, they are part of your syllabus also, natural product syllabus also, right? So ye ho gaya naam, right? Now next point you can see, not only these important, other important steroids like vitamin D, bile acid, cholesterol I already told, right, and sex hormone I already told, right? So vitamin D is also, you know, in present time the problem of vitamin D, right? Maximum people suffering from the problem of vitamin D, and then the joint problem, bones में problems होती है, right? कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, right? क्योंकि विटामिन डी होता है जो क्या करता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, राइट? और कैल्शियम का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाता है तो फिर आपको कैल्शियम की गोलियां खानी पड़ती है, राइट? एंड देन वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, राइट? और कैल्शियम की गोली खाते हैं तो फिर पथरी की प्रॉब्लम होती है, राइट? तो सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। एंड विटामिन डी, आपको पता है विटामिन डी कैसे सिंथेसाइज होता है बॉडी में? ये नेचुरली सिंथेसाइज होता है अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी बॉडी को रखते हैं, राइट? एटलीस्ट कहते हैं कि आधा घंटे के लिए अगर सनलाइट की प्रेजेंस में आप अपनी बॉडी को रखते हो, राइट, तो विटामिन डी अपने आप ही सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में अपने आप ही बन जाता है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर आवर बॉडी ऑल्सो, राइट? सो दैट कि हमारी बॉडी जो हो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे, राइट? तो ये चीज है। बाइल एसिड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा जो लीवर होता है, लीवर बाइल एसिड को रिलीज करता है, जो कि आपको जो ऑयल्स होता है उसके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिपिड्स के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो कई सारे हार्मोन्स हैं, राइट? कई सारे हार्मोन्स हैं जो कि स्टेरॉइड हैं। एक्चुअली दे ऑल आर नेचुरल प्रोडक्ट एंड दे ऑल आर स्टेरॉइड, राइट? तो वी विल डिस्कस दोज इन आवर सिलेबस आल्सो, राइट? And mainly we focus on those steroid which is part of our syllabus, right? So you can see here. After that, next one, our discussion about the basic skeleton of steroid. What about the basic skeleton of steroid? If you see here, the basic skeleton of steroid is cyclopentanophenylene skeleton, right? So you can see this is skeleton, the structure of steroid. This is basic structure of steroid. This is basic structure of steroid. ये steroid का basic structure आप देखिए, cyclopentanophenylene skeleton, right? तो ये है साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन है, राइट? 5 मेंबर्ड रिंग है साइक्लोपेंटेन, राइट? एंड देन यू कैन सी हियर, राइट, 3 1 2 एंड 3 रिंग है, राइट? ये हेक्सासाइक्लिक रिंग है। तो 3 हेक्सासाइक्लिक रिंग है और एक पेंटासाइक्लिक रिंग है। तो इट इज बेसिक स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड। मतलब बेसिक स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड का मतलब क्या हो गया? सारे स्टेरॉइड, चाहे मैं अब कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, चाहे मैं बाइल एसिड की बात करूं, चाहे विटामिन डी की बात करूं, चाहे मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूं, चाहे मैं प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, चाहे मैं एस्ट्रोजन की बात करूं, in all these steroids the basic skeleton is same, and that is cyclopentanophenylene, right? तो मतलब 3 आपको बेंजीन की तरह रिंग दिखाई देंगी, साइक्लोहेक्सेन रिंग दिखाई देंगी, और एक आपको साइक्लोपेंटेन रिंग दिखाई देगी, राइट? तो दिस इज अबाउट बेसिक स्केलेटन, दिस इज अबाउट बेसिक स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड, राइट? तो इट इज बेसिक स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड। नाउ आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल, राइट? अब इसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल। यू कैन सी दिस इज बेसिक स्केलेटन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दिस इज बेसिक स्केलेटन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का बेसिक स्केलेटन देखिए यहाँ पे, यू कैन सी हियर बेसिक स्केलेटन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट? तो दिस इज 1 cyclohexane, second cyclohexane, third cycle. It means these are like a you can see that phenanthrene की तरह 1 2 and 3 ring, right? And cyclopentane, this is cyclopentane ring, you can see this is cyclopentane ring, right? And then here one side chain, you can see here one side chain, right? And then 2 methyl group at you already know at 10 position and 18 position, right? And here secondary OH group, secondary alcohol or OH group, right? So this is about the structure of cholesterol, right? And this is one of the important steroid, right? तो ये एक बहुत important steroid है, right? जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और आपको पता है हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ज्यादा हो गया तो फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है,
हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो इसलिए इसको मेंटेन रखना बॉडी में बहुत जरूरी, और कम भी अगर हो जाता है तो भी प्रॉब्लम्स होती है। सो फिर क्या होती है, जो आपका फ्लो होता है, राइट, जो आप कह सकते हो कि जो चिकनाहट रहती है उसके अंदर, जो आपकी आर्टरीज और वेन है, ठीक है ना, तो उसके अंदर की जो स्मूथनेस रहती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, राइट। तो उससे क्या होता है, ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, उससे ब्लड का क्या नहीं होता, प्रॉपर फ्लो। तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हर समय कहते हैं कि भैया आप लोग देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, राइट। तो बट ये नहीं है कि आपको कोई भी कहे और आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना शुरू कर दें, राइट। इट इज ओनली आफ्टर प्रिस्क्राइब बाय सम डॉक्टर, अदरवाइज सो मेनी प्रॉब्लम्स अगर आप केवल टेस्ट करेंगे। तो दिस इज कोलेस्ट्रॉल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो आपने देखिए OH है, राइट, 1 to 3rd पोजीशन पे OH है, एंड देन 5th 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, एंड देन ये 10 पोजीशन पे एंड 18 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, राइट। एंड देन एट 17 पोजीशन आपकी साइड चेन है, लॉन्ग साइड चेन, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की एक लॉन्ग साइड चेन, राइट। So this is about the structure of cholesterol. Now after that, what is important in our natural product chemistry? अब natural product chemistry में हम क्या चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या हमें देखना पड़ता है? एक्चुअली इसमें हम केमिस्ट्री देखते हैं, राइट। बेसिकली हम बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली उसकी प्रोसेस क्या है उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे पास दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, टू थिंग्स इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस। फर्स्ट थिंग, वी नीड टू clear about chemical structure of our compound, right, based on different types of chemical reaction, right। तो different types की chemical reactions के basis पे एक तो हमें structural elucidation करना पड़ता है। एक structural elucidation का तरीका होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि मैंने कई बार आपको कहा है, राइट। वहां पे हम एक एक करके डिफरेंट टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपाउंड, राइट। सेकंड क्या होता है, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन विद हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस कोर्स में हम क्या करते हैं, वही पढ़ते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस है उसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि एक्चुअल में कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। और दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि उस कंपाउंड को, बिकॉज द कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो हाउ डू वी सिंथेसाइज दिस कंपाउंड, राइट। इस कंपाउंड को कैसे करके एक छोटे से केमिकल से सिंथेसाइज किया जाए, एक तो हम ये पढ़ते हैं। और दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि इस कंपाउंड का एक्चुअल में केमिकल स्प्लिटन है कैसा, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है, राइट। तो दो चीजों पे हमारा फोकस रहता है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जो है वो आजकल आपको पता है मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का हाई कंसंट्रेशन है, राइट। तो ऑलरेडी जब वो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में है तो उसको सिंथेसाइज करने की फिर कोई जरूरत नहीं है, right, we do not require to synthesize cholesterol because we people already know always or maximum time high concentration of cholesterol in human body, हमारी बॉडी में ऑलरेडी मैक्सिमम हाई कंसंट्रेशन है, राइट, हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो फिर हम क्यों उसको सिंथेसाइज करें, इसलिए अब क्या किया गया, आपके सिलेबस में हमने कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं रखी है। लेकिन जब मैं पढ़ता था 2004 की बात अगर मैं करूं, राइट, तो उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस क्या होती थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी और वो हमारे सिलेबस में होती थी जिसको कि हम पढ़ते थे, राइट। लेकिन आपके लिए वो रखा नहीं गया है क्योंकि आज के टाइम पे हर एक की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ऑलरेडी कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो उसे सिंथेसाइज करने का कोई लॉजिक बैठता नहीं है, राइट। तो वी नाउ नीड टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ our cholesterol structure, right? So you can see we have already discussed in my previous class, but once again I revise because maximum student absent in that class, right? The presence of double bond, first thing, right, you can see here what we need to clear, right, in case of cholesterol में हमें क्या क्या चीज क्लियर करने की जरूरत है, तो you can see here, right, first thing we need to clear about you can see here, right, there is one double bond, there is secondary alcohol, there is two methyl group at position 10 and position 14, right, and there is four membered ring, right, 1 2 3 and 4 membered cyclic ring, right, one cycle, two cycle, three cycle, four cycle, it should be clear, right. Last one, side chain at position 17, side chain at position 17, at position 17 side chain, it should be clear, right. And what about the length of that carbon chain and what about the nature of that carbon chain,
इसमें ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, राइट, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है, राइट, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी, राइट, on the basis of different types of chemical reaction. On the basis of different types of chemical reaction, we need to clear all these points. We need to clear all these points, right? तो ये points हम क्या करेंगे, structural elucidation में explain करेंगे, right? तो आप देखिए now you can see it's very simple and you need to understand how do we explain one by one. So first we focus on double bond. There is one double bond, right? How do we confirm there is one double bond? When cholesterol, right, react with H2 in presence of PT, one of the good reducing catalyst, right? So in presence of platinum, when we reduce cholesterol, then they convert into a saturated compound. You can see here cholesterol, right? C27H48 and O, right? It means two hydrogen absorbed by your cholesterol. It means two hydrogen absorbed by your cholesterol. And it means you can say, because two hydrogen absorbed, it means there is one double bond. It means there is one double bond, right? So it is, so the presence of double bond in your cholesterol. So one by one, step to step, we will clear different types of part and different types of groups exist at cholesterol, right? Now you can see next point, secondary alcohol. Now the next point is secondary alcohol. There is secondary alcohol, right? How do we clear it? So secondary alcohol, when oxidized with a good or you can say that oxidizing agent, you know, cholesterol, alcohol, secondary alcohol always convert into ketone, right? So when they oxidize with chromium trioxide, when cholesterol oxidize with chromium trioxide, right? So then they convert cholesterol, right? Cholesterol, right? First cholesterol convert into cholesterol, right? And then cholesterol convert into cholestanol, because here first double bond convert into single bond, and after that your cholestanol, right, cholestanol, secondary alcohol convert into ketone, because you people already know after oxidation secondary alcohol convert into ketone, so this is also important one, you can say that reaction which confirm presence of secondary alcohol in our cholesterol, right? Now after that you can see next, tetracyclic compound. The compound is a tetracyclic in their nature. Now the next point comes, the compound is a tetracyclic in their nature. So how do we confirm there is the compound is tetracyclic in their nature? For that we need to saturate compound properly. उसके लिए हमें कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली सैचुरेट करना पड़ेगा. अब सैचुरेट कैसे होगा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से आपने कोलेस्टेनॉल बनाया, कोलेस्टेनॉल से आपको कोलेस्टेनॉन बनाया, कोलेस्टेनॉन की आपने क्या की, क्लेमेंसन रिडक्शन की. इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg HCl you reduce cholestanol, right? And then cholestanol convert into cholestanol, C27H48. Their molecular formula is C27H48, right? And it belong to CnH2n-6. You can calculate it belong to CnH2n-6, right? C 27 into 27 equal to 54, right? And when you subtract that with 6, then it is 48, right? So C27H48 is a molecular formula of saturated compound produced from cholesterol, right? And that belong from general formula of tetracyclic compound, right? So based on that you can say your cholesterol is a tetracyclic compound. इस रिएक्शन के बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है. तो एक तो आपको ये पता चल गया, नाउ इट्स कंफर्म देयर इज वन डबल बॉन्ड, then it confirm there is a secondary alcohol, and then it is confirmed there is a tetracyclic nature, and that compound is tetracyclic compound. Actually that compound is tetracyclic compound. After 5 minutes, right, the link will expire, we will rejoin at same link, right? So take care, so please after 5 minutes, right, आपको रिज्वाइन करना है विद सेम लिंक, इसी लिंक के साथ, बिकॉज यू पीपल ऑलरेडी नो दिस इज द प्रॉब्लम विद जूम ऐप, राइट? तो आपको 5 मिनट के बाद फिर इससे रिज्वाइन करना है इसी पे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट? यू कैन सी हियर आफ्टर दैट
Next point, presence of cyclopentanophenanthrene nucleus, because it is a basic structure or basic skeleton of steroid, because it is a basic structure or basic skeleton of steroid, right? So presence of cyclopentanophenanthrene nucleus. How do we clear it, right? So when you apply heat, it's approximately 360 degrees Celsius, and in presence of selenium, Se, right, your cholesterol convert into Diels hydrocarbon. Diels hydrocarbon, you people know this is Diels hydrocarbon, which is basic skeleton of steroid. So based on that, we can say that this is a steroid. This is a steroid, right? And there is cyclopentanophenanthrene nucleus, right? Because it is basic requirement for a steroid, right? So your cholesterol is a steroid. Based on this reaction, we can confirm, right? तो इस reaction के basis पे हम ये confirm करते हैं कि आपके पास जो cholesterol है वो एक steroid है, right? Because when we apply 360 degrees Celsius temperature, so in presence of Se, your cholesterol convert into Diels hydrocarbon, and that is cyclopentanophenanthrene nucleus, right? So it shows your cholesterol is a steroid. Your cholesterol is a steroid. So different types of reaction we explain, right, for cholesterol, right, for structural elucidation of cholesterol. Now after that, next point you can see. Now after that, next point, it's related to the types of ring or the size of ring, right? The types of ring and their size of ring. So you can see one by one, right? When we talk about first ring, so you can see ring of first, right? Or ring size of first, right? So what about the size of ring first, right? So cholesterol, how do we clear? Because there is A, B, C, D, 4 types of ring. Then if we talk about first ring, so then how we clear that? So cholesterol on oxidation in presence of concentrate HNO3. Cholesterol on oxidation with concentrate HNO3. You people know HNO3 is a strong oxidizing agent, right? So when we oxidize cholesterol with HNO3, then you know, because at this position secondary OH, right, alcohol. So because we are using strong oxidizing agent and we also apply heat, right? हमने यहाँ पे क्या किया, एक strong oxidizing agent को use किया, right, which release very easily nascent oxygen, जो क्या करता है, बहुत easily nascent oxygen को release करते हैं. Then you can see here that oxidize your this cyclic ring, right, and then they convert into dicarboxylic acid. Why this point? Why they target this point? It is very important in reaction mechanism. We had already discussed about reaction mechanism. तो हमेशा वो point जहां पर, right, कुछ स्पेशल होता है, वहीं पे आपका reagent भी अटैक करता है, right? तो because यहाँ पे जो point था, यहाँ पे OH ग्रुप था, इसलिए इस ही points को उसने क्या किया, अटैक, right? And then they convert into dicarboxylic acid. So why they attack on this point? Because there is secondary alcohol. Secondary alcohol after oxidation easily convert into ketone, and then ketone easily convert into carboxylic acid. So because you are using concentrate HNO3, dilute HNO3 भी क्या होता है, एक अच्छा oxidizing agent होता है. Dilute HNO3 already one of the strong oxidizing agent, and you are using here concentrate HNO3. It means very strong oxidizing agent. So there is no formation of ketone. अगर आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को लेते तो कीटोन बन जाता है, लेकिन आपने कंसंट्रेट HNO3 को ले लिया, तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल ना बनकर के वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन दे कन्वर्ट इनटू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. Within a minute the link will expire, then you people rejoin at same link, right? तो ये ध्यान में रखिए कि within a minute ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा और हमें फिर से इसी लिंक पर रिज्वाइन करना है, right? So then they convert into dicarboxylic acid, you people can see. And after that, when we apply heat and use acidic anhydride, AC2O, acidic anhydride, right? उसके बाद अगर हम heat up करें और acidic anhydride का use करें, तो